Alright, so good evening, everybody. I believe I am very much audible. So just give your response here if everything is alright. Okay, so that means screen and voice both. Alright, so that we can start the session soon. Right, we don't have any quiz today. We all have that is session. Alright. Okay, so yes, it is audible. Okay, so Siddharth, Riya, I got Manan. Okay, wonderful. So let me revise whatever we have done in the last few sessions. So we are basically talking about shell scripting, right? So I'm revising things again. So you know what? We started with understanding of the next kernel and that we have some hardware. Okay, so this is a kind of your hardware, and on top of that we are running this kernel. We all know Linux kernel is supporting two different flavors, even more, but we are talking about these two. We selected Red Hat package management and decided to go with Fedora based OS. So now Fedora is our name of operating system, and we have seen the most important thing. There is no difference between command and GUI. The both are working or using code in backend, right? Then we can interact with Linux by using a software called terminal, and to interact with we need to log in with users. There are two kind of users as of now. We have seen non-root user and root user, right? So non-root and root user. Then after this we have seen what exactly shell is all about. So we are working on specifically bash shell. After exploring some features, now we are here in scripting, right? So basically you are going to learn about scripting options, how we can create script. So I got some question, how to supply option to our command, the self-created command, simply by $1. Okay, so already given by Abhijit, right? Very simple. So scripting, and we are going to learn more about scripting like bash. So we have seen very basic functionality, then user inputs and some conditional statements. Okay, so that conditional statement we have seen in if and else form. Now we move to the new topic in the shell, that is input output redirection, and that IO redirection. Okay, so we discussed about all these terms. Okay, so simply in IO redirection we have seen these options like this, and this. Okay, also and. So we have seen maximum things about output redirection, and that you can revise the last session. That will be fine for everybody. Okay, now what we are going to do today, so we'll talk more about IO redirection. Okay, but before that, what are the different things in output redirection we are going to talk about. So today we are having system 1 and system 2.
1 and 2. Okay, and we will be giving some input to this system. I mean, let's say I'm giving input to this system like a date, then the output will be sent to that terminal, or both. I can give input to this system and the command will be executing here. So simply how we can send a request to a remote system. In the word of ethical or non-ethical hacking, we call it RCE, right? That stands for remote code execution. So remote code execution. So simply remote code execution means we are sending input from this first system and we are sending, and the output we are expecting in the another system. But to make this communication happen, we need something called networking space. So if this is system 1 and this is system 2, how they can communicate to each other? So we need to establish some communication channel. So definitely we will be having IP address. As of now we are using IPv4. We have a very amazing and big session about IPv6 and IPv4 in future, and here we also having IPv4, and both the systems are connected to my Wi-Fi device. Okay, so this is my Fedora system and this is my Ubuntu machine, right? And they both are connected basically. So in short, let me just check the connectivity of this system. So I'm going to my Fedora box right here, okay, and I'm logging. So let's say user root password double space. You can hack it from your own place if you want. All right. Now after just logging into this Fedora machine, I would like to check the connectivity between these two. So this is very interesting topic, and maybe a couple of questions will be there in the examination. Okay, so regarding examination, I believe you might have some idea, but this Sunday we are conducting this exam, and I'm just opening terminal here, and this my terminal is having IP address. So let me check. I'm just first removing this cal command. Alright, ifconfig is the command we can check IP address. So my IP address to this system is this. Okay, and can I connect to Google? Definitely I can. So by using ping or any other command you can check the connectivity. Okay, so this is my Fedora box. This is my Ubuntu machine. Ubuntu and Fedora both are connected to Wi-Fi. So my IP address of Ubuntu machine is 192.168.1.14. See, so I'm able to communicate in between the system by 192.168.1.14. So they both are connected. In short, so I can just give a request to this machine and we are receiving the response. Response means yes, we are receiving 64 byte response from this machine. Okay, so the first requirement to send output or data from one machine to another machine is this networking. Okay, by using this method
You can also create your command line based CMD based chat system or chat. So I'm having this and this system. Okay, so first requirement is done, that is IPv4. Okay, and they all are connected. Second thing is, if you want to send or receive data between the system, we need to use any of the two protocol like TCP and UDP. बस मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये नाम जरूर पता होंगे, बाकी किसी भी चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, और वो भी हमें समझना भी नहीं TCP क्या है UDP क्या है. बट होपफुली यू ऑल आर at least having this name in your mind, TCP or UDP. So we are going to use both the way how we can send data from this machine to this machine by using any of the protocol. Okay? So if you want to send data or receive data from one machine to another, you need to understand the concept of socket first. Okay? We have a big session again in the section of networking what exactly socket is. But about this socket information, we will be having IP address and port number. So this combination we are calling as a socket. So we have IP address here and we have another IP address here, right? Both the IP address. So if we want to send some data from one machine to another, we need to make any machine as a sender and another one where we want to send the data as a receiver. So always a receiver end will start the socket, this one, and sender will connect that socket. So the point is, make sure you are understanding the same. So let me design this diagram again. So here this is your sender and on the target system receiver. Socket is required. So socket either TCP type or UDP type will be here. And what is socket? It's a combination of your IP and port. So this system will be working as sender and this will be working as receiver. So from here to this. Okay, so if I want to send some output here, definitely I need to manage the communication channel between them. So what I need to do, or I need to set up something we call communication channel, right? So hopefully communication channel आप समझ रहे होंगे. Communication channel का मतलब है जिसके थ्रू आप यहाँ से वहाँ डेटा भेज सकते हैं. ओके, सो ये सारी रिक्वायरमेंट अगर आपको अभी समझ में आ रही है तो जस्ट से यस इन द चैट विंडो. एक कंफर्मेशन जरूरी है बिफोर जंपिंग इनटू द प्रैक्टिकल कि रिसीवर के पास कुछ सॉकेट जैसा कुछ होता है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आप नाम से काम चलाओ अभी. This is not the right time to discuss about. Okay, so you are sending this data to the target machine and उसके बदले में ऐसा कुछ हमें मिलेगा. ठीक है, वंडरफुल. वैसे मेरा पर्सनली मानना है कि हमें सॉकेट और प्रोटोकॉल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है. थोड़ा बहुत होगा कि वो एक बहुत ही अलग कहानी है, पर हमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये ऐसे चलेगा. ओके, नाउ तो either we can write our own program in Python, Java, C, or how we can open a socket in Linux. So there is a utility, we are calling it netcat. Okay, this is a utility that can be used to create socket or IP port. Okay, so let me connect my Ubuntu machine. So this is my Fedora
This is my Ubuntu. So Ubuntu is here. Okay. So we are using private IP, any kind of IP. So netcat is a utility that can be used for creating this. So what I'm doing is basically I'm going to use my Fedora system to connect Ubuntu machine first. अब आपके लिए क्या है, आपको दोनों स्क्रीन यहाँ पे दिखनी चाहिए, अदरवाइज आपको थोड़ा सा बिलीव नहीं होगा. सो व्हाट I'm going to do is I'm going to search for remote something. तो मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर देता हूँ फिडोरा में, and let me connect to my Ubuntu machine. So I am already using this option. So 1.14:5900. I'm not using full screen machine, so I'm trying to connect it. So hopefully ये चलना चाहिए. पासवर्ड जो भी है, remember authentication, authenticate. Wow. So now I have my Ubuntu machine here. Fine. तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ. So this is my Ubuntu system जहाँ पे IP क्या है ये है. सिंपल अभी इसको ऐसे करके रख देता हूँ कि दिस इज़ माई Ubuntu मशीन जो मेरे दूसरे सिस्टम पे कहीं लैपटॉप पे चल रहा है, एंड दिस इज़ माई Fedora. So by using any of the software like remote or the way you want, you can access it. ठीक है. तो now what I want to do, let's say if I'm running date command or cal command, I want to send output of this one to this machine. Okay, so simply I want to send output of this cal command to the target machine. Okay, अब ये करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, netcat facility यूज़ करेंगे Ubuntu साइड पे. So I'm going to open, थोड़ा सा वाईफाई पे है तो स्लो हो सकता है. What the hell? No, please. ओके, मैं काम करता हूँ, मैं Ubuntu वाले लैपटॉप पे जाके और यहाँ पे खुद ही ओपन कर देता हूँ. ठीक है, तो ये ऑलराइट. ठीक है, सो मैंने ओपन कर दिया. वाईफाई है, स्लो होगा. आई होप टाइपिंग मस्ट बी ऑल ओके. ठीक है, so this is my another machine, and if I want to open netcat port, so the command that you can use is nc. ठीक है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. अगर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है तो यू कैन इंस्टॉल इट. nc and -l. L stand for listen, and then the port number, let's say double it. Make sure you're using some port number that is not being used by your system. मतलब ये सब कुछ फ्री है. अब क्या है कि आपके सिस्टम पे ये, जस्ट अ मिनट गाइस, 1 सेकेंड का टाइम चाहिए बस. हेलो, अरे स्टेशन में हूँ, बताओ जल्दी. स्टेशन में. अरे नहीं यार, बताओ जल्दी. आधे घंटे आता. Okay, welcome back. So now nc-l means I am opening a port number on this particular system. तो ये यहाँ से मैंने चला दिया. Okay, now this is my Fedora system, as you know, my Fedora OS 32. Okay, if I want to connect from this machine to that system, so how do I connect?
पहले एक जनरल चैटिंग कर देते हैं. So let's say NC 192.168.1.14, that is the IP address of this machine, and the port number 8888, right? And I'm hitting enter. See, it got connected. I don't know it is or not, but let's say if I'm sending message like hey, wow, received, right? Like hi, how are you doing, right? And if I reply back, I think I'm fine, right? And if I just check back here, okay, that means by default this netcat facility you can use to chat in between systems. So for example, अगर आप अपने कॉलेज की लैब में हैं तो टीचर बात करने नहीं दे रहे हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, right? So by using this netcat facility you can connect one system or maybe multiple system by using this chat section. Okay, so what kind of socket is opened here? So by default if you're using NC command, it is having kind of TCP. Okay, by default it's a TCP port. So what I'm going to do, if from my client machine I'm using Control C, तो ये भी बंद हो जाएगा. Okay, now client connection is controlling. So if you don't want an interruption, what you can do, -K. इसका मतलब क्या है? Client cannot interrupt server. So if I use this, okay, fine. Okay, so I can simply use Control C. It is not going to terminate that one, right? But talking about the sending output of a command. So for example, if I'm using cal, okay, what I'll do now, I'll use pipeline. Okay, I'll use pipeline, and that pipeline is going to store output of cal command here, and then it will be sending to this. So if I hit enter right here, see, so I can use this like who am I root. Okay, again, so now every time it is creating a new connection, echo hello world, right? So this is the first method, very simple even, where I'm running my input here and I'm sending my output through this socket to this machine. Okay, hopefully ये बात समझ में आ गई होगी. So if you are understanding it very much, say yes in the chat window. मतलब मेथड बढ़िया है, अभी तो आप बहुत कुछ कर देंगे इससे. एंड स्पेसिफिकली अगर आपको कोई सर्वर मिल गया तो राइट, तो आते हैं साई उस पर भी. सो इफ यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द सेम, जस्ट से यस. Not exactly Ria, it's not like telnet because telnet is something that you need to be set up. तो कुछ ऐसा मान सकते हैं, बट काफ़ी कुछ नया है इसके पास. Alright, so wonderful, सब लोग बहुत स्मार्ट हैं अभी तक. Okay, now a question that I found, किसी ने पूछा है कि how we can execute command in the target site. See, मतलब अभी तो हम कमांड यहाँ से जा सकते हैं. मान लो this command, I mean this NC is a very popular tool. So if you use NC you can create backdoors. जो भी हैकिंग में होंगे उन्हें बैकडोर का मतलब पता होगा. तो आप किसी सर्वर में जाके अगर कभी एक्सेस मिल गया तो आप यहाँ पे NC को सेटअप कर सकते हो, जिससे आप यहाँ से कमांड चलाओ और वो एग्जीक्यूट यहाँ होगा. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू
execute some command here, okay, on the server side. That means what I want to type this command here like this, but I want to execute here, not here, right? I don't want to execute in my client machine. So how do I do that? बहुत आसान है, right? मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है. This is the command that is receiving data directly in the screen. What you can do, you can put the pipeline and use your shell as a pipeline output and use -e. Here E stands for execute. So from now onwards, if I connect to NC directly like this, see, I'm connecting it from my client system and I'm just hitting enter here, and now I'm connected. See, if I run date is not present in my machine. Execute, cal execute. Who am I? Fire, right? Even echo hi. Everything you are typing here, that is executing that side. So simply you are putting nc-l port number, k for not cancelling it, and this bin bash. Okay. Even the most important thing is you can use some graphical software as well. See, ho. Okay, I'm just killing it. Okay, so I can execute even Firefox. See, so in my this machine Firefox is running and kill all. I mean, मैंने तो बहुत मज़े किए थे Firefox और इनके साथ. So remove it. Alright, so simply if you want to reboot it, if you do reboot, definitely वो हो जाएगा. आपको पता ही है, reboot करने से reboot हो जाएगा, right? So if you do reboot, तो मैं कर नहीं रहा, but in short, this is one of the big method and very simplest method to perform whatever you want. So like you're having a client, anyhow you successfully executed that script. तो आप में से जितने भी लोग होंगे लाइक जिनको वेब एप्लीकेशन अटैक्स करने आते हैं, राइट, स्पेसिफिकली RCE में, या फिर आपको रिमोट शेल देनी आती है, उन सब में आप जाके ये कर सकते हो. तो OWASP is one of the best way to learn about web application security, OWASP. So this is the best open source application platform. Here you can use that, or maybe you can deploy your application by using DVWA. This is also very amazing one. So number of things are there. We'll talk about this thing somewhere. Okay, I got some question. Yeah, long distance need to be have a public IP, or maybe you can use a router. So anyway, both is going to work. So guys, give your response here if you are understanding this method. This is the receiver side where we executed NC, and from the server client. So I'm just disconnecting it. Okay, so give your response here. अभी तक सब कुछ सही है तो. Okay, so Rhythm, Siddharth, they both are fine, right? Wonderful. How we can get output in the client machine. That means अब आपको दोनों साइड आउटपुट चाहिए. ओके, सो एक और आइडिया है. यस,
Thakur, we can do this in Windows system as well. You can install this netcat facility, or there are number of other software you can use in Microsoft Windows. तो आप यहाँ से जो भी कमांड भेजेंगे वो यहाँ पे चल जाएगी. Okay. Now there are much more things. By using netcat, what else you can do? Uh, so Piyush is asking, instead of text, can we redirect display as well? Yes, we can. We can. मतलब जिसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ देख लेना. अभी हम टेक्स्ट इधर से भेज रहे हैं. डिस्प्ले एग्जैक्टली तो नहीं भेज सकते पर डिस्प्ले का डेटा भेज सकते हैं. लेट मी शो यू. मैंने बहुत टाइम पहले एक एग्जांपल किया था, कभी बहुत टाइम हो गया. आई डोंट नो दैट इज गोइंग टू वर्क और नॉट. तो दिस इज योर मशीन. This is your machine. I'm not giving any guarantee kind of thing, but let's say I have a movie MP4 file. Okay, I have MP4 file, and this MP4 file is a kind of binary data, and I have VLC media player. Let's say I have VLC media player in this Ubuntu machine. So this is my Ubuntu system. This is my Fedora, and from this machine I can send this binary file, and here VLC can play this. एक हिसाब से क्या हो जाएगा, आपके पास एक मूवी है बट आपके पास प्लेयर नहीं है, फिर आपने इसे यहाँ भेज दिया और ये प्ले कर देगा. ग्राफिक्स थोड़ा सा रिडायरेक्ट करना नेटकैट के लिए इतना पॉसिबल नहीं है. वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर द सेम, बट we'll talk about that. Okay, now so let me tell you, first of all I need to download a kind of video from YouTube. So hopefully system won't be slow. कुछ जल्दी से हो जाए फटाफट तो will be fine. Okay, and let's say I'm using YouTube. Alright, and here I'm going to download this any of the video, most probably fine, कुछ भी मिल जाए, पहला ही देख लेते हैं. Okay, and now I'm going to just take this video and download it here. SS, बाकी सबको YouTube का ट्रिक पता ही है, right? So this is my Fedora machine where I am downloading this. कितनी बड़ी साइज की होनी चाहिए थी? What the hell? I believe okay, yes. So I'm saving this. One completed. इतना fast, इतना तो मुझे भी नहीं पता था. Okay, so the file I downloaded, I think it's having around size of 21 MB. फाइल का नाम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, so I'm just renaming it by फाइल WEMB है क्या? abc.webm, राइट? आई डोंट नो ये फाइल VLC में चलेगी नहीं, बट हाँ
we have this file called this one, and if I check right here, so it's 21 MB size. Okay, now what I'm going to do is, in my Ubuntu machine, I'm going to receive this socket, and I'm going to use VLC command and receiver hyphen. So, and I'm going to enter it. Fine. See, now what I'm going to do is, I'm going to open that file by using cat command and nc 192.168.1.14 double it. Okay, enter. So hopefully देखते हैं इधर चलेगा. अरे वाह, चल गया. See, this is my Fedora machine, and यहाँ से मैंने cat command से, अब इंटरनेट पे रेंडरिंग थोड़ी स्लो होगी, नहीं तो सी, सो मतलब वीडियो सही चल रहा है मेरे दूसरे लैपटॉप में, बट यहाँ से वहाँ वर्चुअल मशीन से वापस जाना, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट दैट यू कैन पिच, कि आपके पास मूवीज़ है, आप इसे भेज सकते हैं, आवाज़ भी आ सकती है अगर साउंड ड्राइवर्स भी कुछ भेजे जाएं, राइट. So simply, when you have two systems and you can create this. So ये देखो यहाँ चला गया because the complete file we have sent. So simply अब ये पूरे बफर में है और बफर में जाके उधर चल जाएगी. ठीक है, बता दूँ ये डिस्प्ले पे ऐसे दिख रही है, पर जो मेरा रियल लैपटॉप है ना, इधर मस्त चल रही है, इस पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट. चाहे तो देखो मैं यहाँ पे स्क्रीन दिखा देता हूँ दिस, राइट. बाकी मूवी तो आपको पसंद आई ही होगी, राइट. सो यस, वी कैन, यू कैन अभिजीत, आई विल बी गिविंग यू दैट लिंक कि कैसे कर सकते हैं. सो नाउ okay, I'm going to close that. So simply, if you have number of things, okay, so कैमरा भी एक्सेस कर देंगे, हो जाता है कैमरा भी एक्सेस, वो थोड़ा सा टॉपिक से बाहर की बात हो जाएगी, बट कैमरा भी एक्सेस हो जाता है, सब एक्सेस हो जाता है मतलब. ठीक है, तो ये दिस इज द काइंड ऑफ हिस्ट्री. तो दीज टू ऑप्शंस यू कैन रिमेंबर, काइंड ऑफ, राइट. एनीवे, सो बिकॉज एनसी इज रियली ऑसम, राइट. तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेफिनेटली डू अ रिसर्च, राइट. That means I have seen, मतलब मैंने, it's been 3 years मैंने एनसी के बारे में पढ़ा था. काफ़ी सारी रिसर्च है मेरी खुद की जो इंटरनेट पे नहीं है. सो यू कैन टेक दैट ओथ, मतलब आप ये कसम लो कि आज आपको एनसी एंड एनकैट इसके बारे में अच्छा सा कुछ करके ब्लॉग लिख लेना, एंड आई एम राइटिंग अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन, और वहाँ आप शेयर भी कर सकते हैं that. So simply having this one, okay, so hello world, share your views about NC, right. बस इतना ही बहुत है, एंड पोस्ट हैशटैग वगैरह बाकी आपका काम है. सो सिंपली बहुत अल्टीमेट है, मतलब बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है. सो हिस्ट्री आई विल बी ऑल्सो पुशिंग ऑन गिटहब ऑन बोथ द मशीन, ओके. सो व्हाट एल्स यू कैन डू, you can
you know, you can install a virtual machine. अगर मैं आपको एक असाइनमेंट दूँ, अगर आपको करना ही है तो this is your Fedora, this is your VMware, sorry, Ubuntu, right? Ubuntu के अंदर एक सॉफ्टवेयर है कॉल्ड वर्चुअल बॉक्स। तो आपको यहाँ से बैठे बैठे इस वाले वर्चुअल बॉक्स पे एक ओएस इंस्टॉल करना है, जहाँ पे आप इस सिस्टम पे नहीं जा सकते। यहाँ वर्चुअल बॉक्स ऑलरेडी पड़ा है, इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है यहाँ से बैठे बैठे। ठीक है, आप वर्चुअल बॉक्स ले सकते हैं या फिर आप KVM भी ले सकते हैं। तो सिंपली you can use any of this option or idea simply. Okay, so this is something you can use. Okay, about NC, what else you can do? So it's up to you. You can do your own research, but you can transfer a file, you can do RCE जो आपने किया थोड़ा बहुत, you can stream media, you can take camera access, right? A number of things are there that you can take from Netcat. Okay, this is about Netcat. बहुत सारे ऑप्शन है, मैं सारे नहीं दिखा रहा, but this is how you can take it. Okay, so simply Netcat is all set. Okay, now we are going to talk more about kind of input output redirection. Okay, so right now I'm going to talk about one more tool. We call it grep. Fine, so grep is one of the most amazing utility in Linux shell scripting. You can use this grep tool or software or command, ये actually एक language है पूरी, and to filter the output. Okay, ये सारी कुछ चीज़ें हम shell scripting में आगे यूज़ करेंगे, बट पहले grep देख लेते हैं. Okay, so for example, let's say I am creating a file under temp ok.txt, and here I'm writing, let's say, hello world, this is me, and hello. Okay, and hello, then again hello, and something like hello. Okay, number of things are there, and I'm writing HELLO, and of course hello. So I'm writing a number of options. Okay, now मतलब आप ये मान लो कि अभी तक आप किसी कमांड के बारे में एक्सप्लोर करना चाहेंगे, तो वो एक तो हो गई NC, and second one is grep. So do your research, right? And once you do your research, you'll be really happy to know that grep and NC, they are the most amazing utility in Linux, one of the most amazing utility. Okay, so now I have this temp ok.txt. I have number of lines. For example, what I want is, I want to print only those lines that are having hello keyword. Okay, those lines. So for that purpose I can use grep, the word hello, and the name of file. So if you see here, exactly hello it's matched in 1, 2 or 3, right, or 4. So 1, 2, 3, 4.
So that means grep is by default matching the exact pattern. Okay, if I want to match the capital letter hello, HELLO, it is going to match the capital letter match. That means it's a case sensitive search. Okay, but what if you want to search all hellos either in small or caps, so you can use -I option. Okay, this will be really amazing. So you can hit enter. Now if I'll show you the file tmp, okay, you have all the lines. Okay, so all the lines that having hello either capital or small or anything, right? So these two options. Now one more thing, if you want to print the line number as well, you can use -n option also. It will give you the exact line number where exactly this hello keyword found. So simply line number it is going to match and it is going to print. Although you can also use this IN option in one line or maybe an I. It doesn't matter which option you are writing first or last. Okay, so nothing to worry about. All right, now going back to a few more things. Okay, so for example, I want hello that having only H capital, right? So I just want to match those lines where we have H as a capital, rest everything is in small. So definitely this -I option is not going to work. So what you can do, grab some anchors, like either you want H capital, तो इससे ये तो हो जाएगा, but you want only those either H in the small or H in the caps. Only first character you want to conditionalize. That means you want to match first character either caps or small, rest everything is small. Okay, so what I can do is I can put this square bracket in the first character and I can use small h as well. So it will give me all those lines either having capital और small hello. अगर आप देखोगे तो शायद ये नहीं आया, right? So capital और small hello, grep -h HELO. ओके, एक और मेथड भी देख सकते थे. So exactly तो नहीं है. Okay, so there is another way. You can use -E option and then you can use small hello and capital H hello. So -E और I, क्या हो गया यार ये वर्जन में, आई थिंक सम प्रॉब्लम इज देयर बट आई डोंट नो. मतलब होता तो है, देख देना एक बार कि स्मॉल हेलो और कैपिटल हेलो कैसे आएंगे. एनीवे, वन मोर थिंग, लेट्स से देयर आर सम हेलो वेयर द we don't have E, we have only A. So I want to print those lines also. So grep and H, right? Anything H, and I want either E or A, both. Then LLO. It accept regular expression. So अभी क्यों नहीं दे रहा पता नहीं, but hello or grep is accepting regular expression as well. So I can try from A to Z, कुछ भी हो. Oh sorry, in the first character if it is a capital H, yes, HAA. So what I can do is I can use
E and A, and of course case sensitive also. Now I have this hello, hello, or maybe if I want capital H, then H A L L O. So here we have A. So exactly we can use that, right? एक दो और पैटर्न दिखा देता हूँ. If you want only those lines where the hello is in the starting of the line, okay? Hello कहाँ है सिर्फ starting of the line. So hello and this caret sign. So you will be getting only those lines where hello is in the starting of the line. Or maybe you want to search for those patterns जहाँ पे hello in the last of the lines. See, the last line जहाँ भी hello है, that is this one. So these are some markers you can use, starting of the line, last of the line, or maybe number of these. So in the examination जो टेस्ट संडे को हो रहा है, you will be getting a number of cases of grep. तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर देना. ओके अभी तक सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए. ओके so just give your response here if everything is fine till now. Yes, Siddharth, it is accepting all regex. Alright, so let me know. अभी सब ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं होना चाहिए. Okay, wonderful. So I'm getting response from maximum people, right? ठीक है. Yes, we can find. Okay, so one question asked by Rhythm, can we find a file? मतलब अभी क्या है, you are searching hello keyword in the file और written में number of lines आ रही हैं. For example, I want the name of file जिसमें hello लिखा है कि नहीं. So I can use -l. It is going to give me the name of file if it is written. Okay, and for example, let's say I want to search this one, or maybe I want to search for the file जहाँ पे root लिखा हो and under etc folder. So this is my etc folder of system, and actually recursively, see, so what I'm getting is I'm getting the list of files जहाँ पे क्या लिखा है root -r4, that means keep exploring. अब किसी भी फाइल को खोल के देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिखा भी है नहीं लिखा पता पड़े आंसर. सो आई एम ओपनिंग दिस फर्स्ट फाइल, sorry, I'm opening the first file and here I want to search कि यहाँ पे root है या नहीं. So I'm copying it, etc dns mask. Okay, so grep-i root etc dns mask.conf. Yes, I got it. Any other random file, let's say the last one. So grep-i root /etc lvm backup and fedora localhost-live. Fedora localhost-live. Yes. Okay, so this option is really amazing. You want to list of all the files. -r मतलब क्या होता है, इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी होगा वो रिकर्सिवली ब्राउज करता रहेगा. सो आई एम लुकिंग फॉर ऑल द फाइल्स जहां जहां भी रूट लिखा है, राइट.
that we can also see file with specific name. For example, आपको एक ऐसी फाइल चाहिए जिसका नाम है passwd, so I can grep passwd. See, I got the file called passwd, so ls folder name and this. If I want exactly passwd, so I can use -w. That means it is going to match exact file passwd. They both are backup symlinks. Okay, so if you want, file name is this, so इस file का नाम ही क्या है, passwd. If you can just cross check it, it is passwd right here. Okay, so you can always have a name of file, but you have to browse it first, ls and the name of directory, then similar data. All right, so simply that will be cool. Okay, I hope Sitish you are getting your answer. All right, so -r, grep and everything is fine. Okay, now one more thing. Let's say I have temp ok.txt. I don't want those lines where hello is written. I want lines where hello is not written. So I'm using -v. V means reverse search. It is not going to print. Okay, sorry, not root, where hello is not written. So it is not printing that, but capital hello तो दे ही रहा है. तो फिर what you can do is you can put -i. See, so -i means case insensitive. Again, you can just use this option or use this option also. Maybe थोड़ा सा सेशन फास्ट हो आज का. You need to rewatch this video again. Okay, but you can understand about the same. Okay, so anyway, this is something we can. Grep is not exactly a combination of a single algorithm. Actually क्या है, grep एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज पैटर्न, सॉरी, जनरल रेगुलर एक्सप्रेशन, काफ़ी लोग ग्लोबल भी बोलते हैं, पैटर्न. इस पे आपको पूरी की पूरी ग्रेप पे 300 और 400 पेजेस की बुक मिल जाएगी इंटरनेट पे. सो इट्स अ कंप्लीट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें एक एल्गोरिथम नहीं चल रही है, राइट. सो आप ग्रेप को कमांड मत मानो, ये एक पूरी की पूरी लैंग्वेज है डेटा सर्चिंग के लिए. लिनक्स में बहुत अल्टीमेट लेवल पे कोर्सेस होते हैं डेटा सर्च करने के लिए, राइट. तो वहाँ पे ग्रेप बहुत अमेजिंग है. मैंने कहा ना कि आपको रिसर्च करने की नीड है, राइट. सो होपफुली अभी तक सब कुछ समझ में आना चाहिए. एंड ऑलवेज फील फ्री टू यूज मैनुअल ऑफ दिस कमांड. यू विल बी लाइक, समझ लो कि बहुत सारे, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, राइट. बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस. दिस इज़ अ जाइंट कमांड. मतलब इतना कुछ है कि शायद आप पढ़ते पढ़ते टिक 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 हो जाओगे, राइट. बात समझ में होपफुली थोड़ी थोड़ी आ रही होगी. ओके, वंडरफुल वंडरफुल. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट ग्रेप. एक दो कमांड और हैं, उन्हें भी फटाफट देख लेते हैं. सो cat temp ok.txt -n, we have around 10 lines. So what I'm doing is, let me just copy a few more lines, like del vex, and I'm copying it, pasting it 7 more times. Now I have around
these number of lines, right? So sometimes we want to have only top 10 or top 20 or few lines. Okay, I want a line from the top but only 5. मतलब हमें सिर्फ ऊपर से या नीचे से कहीं से भी 5 लाइन चाहिए. So when I have this, I can use head command /tmp ok.txt. If you use head by default, it is going to give you top 10 lines. But if you want it 5, you can use -5, only 5 lines. Or the much better option is -n number of lines. ये सारी चीजें एक ही हैं. So there is a file and we want number of lines as output. तो आपको इन दोनों कमांड के बारे में भी अच्छे से पढ़ना चाहिए. हेड एंड टेल, ये टॉप से और ये बॉटम से, राइट? So by default top 10, by default bottom 10. Rest, so I have this, command head -2 ok.txt. Similarly, tail -2 temp.txt from bottom this line. Or if I'm not writing anything, ये bottom से 10 line दे देगी. ठीक है? तो simply काफ़ी सही है. Okay, now I can give you some more example of it. For example, I have a cal command. अब मुझे कोई बोले कि मुझे सिर्फ top 3 lines ही चाहिए. What I can do? Here I can use pipe head -3. See, और मे भी कोई मुझे बोले मुझे bottom से ही 3 line चाहिए, तो tail -3. So I get this space and all this. ठीक है? So hopefully use of tail or head along with pipe and individual, it's all fine. Okay, one more last thing about this head and tail. What if I'm looking for only this line, see 12, 13, 14, this line, only this line. So what I can use, first of all, I'll use head and 1, 2, 3, 4, 5. Then I'll use -5. Then I'll give this output to the pipe and use tail -1. ठीक है, मतलब आप पाइप कितनी बार भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल आप पे ही डिपेंड करता है. So as soon as you are able to implement the logics, you can use head, tail, or maybe whatever you want. ठीक है? So this is something. Let me know if everything is all okay and understood. तो आप अपना मत इस कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अपने विचारों को लिंक्डइन पे प्रकट भी कर सकते हैं. ठीक है? Alright, so okay, so give your response here. Wonderful. So Meher, Radam, they both are fine. Ashif, all good. Okay, so आप लोगों की रिसर्च के लिए जो मैंने दोनों कमांड बताई हैं, ग्रेप एंड नेटकैट, ये आपकी मोरल जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर थोड़ा सा इनपुट्स दें. राइट, सो सिंपली ओके. नाउ अब और क्या कर सकते हैं हेड और टेल के साथ? वो सिर्फ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट काफ़ी कुछ आप लोग भी करेंगे. ठीक है, तो व्हाट आई एम अनाउंसिंग इज हम कुछ प्लान कर रहे हैं, आई थिंक 2 या 4 सेशन के बाद. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एग्ज़ाम दिस संडे. ओके, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा. ओके, इनमें से जो लोग भी अच्छे स्कोरर होंगे
उनको हम अपनी डेलवेक्स की टीम में रिसर्च के लिए हायर कर देंगे, राइट। हो सकता है हम आपको स्टाइफन भी पे करें, डिपेंड करता है हमारे काम पे, राइट। एंड पीयूष वी कैन डू दैट, ठीक है। सो डेलवेक्स और स्कोर भी बहुत अच्छा तो हमें नहीं चाहिए, बट फॉर एग्जांपल मान लो 2 घंटे में 4 क्वेश्चंस होंगे या 6 होंगे, तो एटलीस्ट 50% प्लस विल बी कंसिडर्ड। अब उसमें से भी जो टॉप 3 लोग होंगे, राइट, दीज टॉप 3 पीपल विल बी ज्वाइनिंग दैट कमिटी, ओके। इसमें क्या करेंगे वो बात की बात है, ओके। नाउ द एग्जाम्स विल बी 100% प्रैक्टिकल एंड उसके लिए मैं आपको एक फॉर्म देता हूँ। आपको फॉर्म में क्या भरना है, फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट फील्ड है वो है यूज़र नेम। सो जो भी आप यूज़र नेम आप इस फॉर्म में भरेंगे वही यूज़र नेम आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, राइट। सो लेट मी जस्ट चेक, ओके, वी हैव फॉर्म। और मैं इसे कहाँ पेस्ट करूँ, आई थिंक यूट्यूब कहाँ गया मेरा, ओके। सो आई एम ट्राइंग टू पेस्ट इन दिस यूट्यूब, तो मैं किसी नाम से, हाँ मैंने वैसे पेस्ट किया है अभी अपने दूसरे अकाउंट से। यू कैन ट्राई टू चेक देयर कि आपको मिल पाया या नहीं मिल पाया, मतलब मुझे वैसे दिख रहा होगा। So let me just refresh it everything and I think मिलना चाहिए था। अदर गाइज लाइक मे बी रिदम, पीयूष, हर्ष, आप लोग एक बार ट्राई करो पेस्ट करने का यहाँ पे चैट पे, सो आई कैन जस्ट ओपन इट, राइट। ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन अभी प्लान में है 4 या 6 में से कुछ होंगे। 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा एंड ये एग्ज़ाम होगा अराउंड 4 PM टू 6 PM संडे, ठीक है। लाइव आपको सब कुछ मिल जाएगा, नॉर्मल अकाउंट से ब्लॉक होता है तो व्हाट्सएप से, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई विल बी गिविंग दिस लिंक इन डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। इवन रिदम या पीयूष या हर्ष, आप लोग कोई भी टीम में से आप उस ग्रुप पे डाल दें, ठीक है। तो 5 to 7 क्षितिज, हाँ कोई स्पेसिफिक टाइम रिकमेंडेशन हो गाइस, अगर आप इस टाइम में थोड़ा सा कम कंपैटिबल हो तो बता देना, ओके क्षितिज, आई विल टेक योर रिक्वेस्ट। तो हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपका प्रेफरेबल टाइम उसे फॉर्म में शायद लिखा होगा, ओके। वंडरफुल गाइस, सो आज के सेशन के बारे में लिंक्डइन पे जो भी हमने किया है आप अपना रिव्यू शेयर करें, राइट। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, आई मीन दिस सैटरडे। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज़ डू रिसर्च ऑन NC एंड Reboot, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके बिहाफ पे मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी देने वाला हूँ, राइट। आफ्टर एग्जामिनेशन इन फ्यू डेज I'll give you the project. Okay, so have fun guys, wonderful and it was a nice day. I mean आज तो बहुत बड़ा दिन था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, but ठीक है। Right, bye bye guys, thank you so much.